ओके, तो देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ाई की। Hassan, please mute your mic. So we have already proved, we have seen two different methods how to prove that. Basically both are same. In first method, how to prove that the general equation of second degree will represent a pair of straight lines. If del equal to 0, I mean ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square equal to 0. So that we have seen. Okay, tell me after this, क्या आपकी क्लासेस हैं इसके बाद? नेक्स्ट क्लास? मुझे 10-15 मिनट और चाहिए था। मैं कह रहा हूँ इसके बाद क्लास है क्या आप लोगों की? ओके सर। So we have seen change of origin. Let me share this here. Sorry, screen. So let me recall that change of origin. Change of origin when axis remain parallel to original axis. So that article we know that in change of origin, suppose we have this x, this one as y, and this one is origin. And let me shift origin to say O dash. And this is your coordinate system capital X, capital Y, capital X, capital Y. And suppose there is a point P whose position with respect to, okay, and suppose this O dash, O dash, this position of this coordinate with respect to O is HK, and suppose the position of this P, okay, P is basically this P with respect to this X and Y axis, coordinates will be given by XY, and with respect to this one, it will be given by capital X, capital Y. So you can see that here the relation between capital X, small y, and capital X, capital Y in terms of HK is given by this one. X is equal to X plus H, and Y is equal to capital Y plus K. You can draw it. Depending on HK is positive, negative, it will automatically change sign. I mean, in which quadrant origin lies. So you can see that if we draw perpendicular from this one on X and Y axis, let's see, this one is H. See this capital X, capital Y. This one is capital X. This distance capital X. This one is capital Y. I mean this distance mod X, mod Y. Suppose in first quadrant, then you can simply write this one, and this one is your whole X. This one is whole X, and this one is H. So you can see that this basically this small x is small h plus this distance capital X. This distance capital X. Similarly, you can write y. So this is the relation when origin is shifted to a new point. Say in place of O, this we have the new origin as HK, whose coordinates are HK. But here important thing is that axis remains parallel to original axis. Axis remains parallel to original axis. So what will happen that suppose if we have equation with respect to this small x and small y, if we have some equation of this type, say f of xy equal to 0, f of xy equal to 0, then on transforming change of origin keeping axis parallel to the original axis. In fact, right here keeping axis parallel to original axis, keeping axis parallel to original axis, I mean direction original axis. So you can see that if any equation is f of xy equal to 0, then what will happen that we will replace small x by capital X plus h, and small y by capital Y plus k is equal to 0, this one. So here important thing is that you can note here that it may be easily seen that this transformation only the first degree term.
in an equation of second degree. And this, and another important point is that the above law of transformation is independent of the angle between axes. Now here next article is article 5.6 as per your syllabus, and here we need to prove that angle between the lines represented by the equation so angle between the lines represented by the equation this we need to find. See, now if you recall, then we already know that we have already seen that angle between two lines passing through origin, its equation is given by ax square plus 2hxy. You can call ax square, say capital Ax square. Ax, suppose this equation of pair of straight line passing through origin, pair of straight lines passing through origin. And in this already we have proved how to find angle between pair of straight line passing through origin. We know that theta is given by tan inverse 2 root h square minus ab upon a plus b. This already we have proved. Now we need to find angle between the lines represented by this equation. So you can see that already. See, in case of if your pair of straight line passes through origin, then in that case we have every term of degree 2. You can see x square, xy. This one is of degree 1. This one overall degree 2. Here y square. But here, apart from this, also we have some linear terms as well as constant term. Linear terms mean of degree 1 in x and y, and constant term. So if this equation represents pair of straight line, then it may or may not passes through origin. So using previous article, we will see that whether line passes through origin or whether line is not passing through, whether lines are not passing through origin. In both case, this formula will work. In both case, this formula will be same. I mean, angle between those lines we will use same formula. Why? See, we have already seen that if origin is shifted to the new, say this hk, if origin 0 0 is shifted to the new coordinate, then we have a relation as x equal to x plus h and small y is equal to y plus k. We know this relation. Small x equal to x plus h and small y equal to y plus k. And after doing this transformation, this equation reduces to, please mute your mic. And after doing this transformation, this every term in this equation will be of degree 2. So after doing this transformation, the new equation will be of this type. Say only these terms will remain. So I can say that ax square plus 2h xy plus b y square is equal to 0. This will be your equation when we shift origin to the new coordinate hk. This new coordinate is what?
the line point, I mean point of intersection, let us assume that the point of intersection of these two lines is given by HK. So whatever be the origin, we need to shift this origin to the point of intersection and consider point of intersection as the new coordinates. And your axis must be shifted parallel to the initial axis. So if we do this transformation, then this equation reduces to this one. Only degree of 2 degree term will remain, and all linear and constant term will be 0, because this one is origin, and equation of line passing through origin with this new origin will be of this type. And we already have proved that what is the angle between this one. So you can see that the angle between the given lines is therefore theta is equal to tan inverse 2 root h square minus ab upon a plus b. And if the lines are parallel, if h square equal to ab, lines are parallel if h square is equal to ab, and perpendicular if a plus b equal to 0. And you can write it cot inverse a plus b upon under root 2 upon under root h square minus ab. So and perpendicular if a plus b equal to 0. So this we already know. ठीक है, तो overall क्या निकला कि whether your line passes through origin or not, we will use the same formula to find. And why? See, whatever this a, h and b is there, on doing this shifting, it is not, coefficient is not going to change. Coefficient of x square, coefficient of xy, coefficient of y square will not going to change after shifting origin to the point of intersection of the lines. Only thing which will change is this small x small y will be now in terms of capital X and capital Y. And since it passes through origin, the new origin, which is the point of intersection of the lines, therefore every linear and constant term has to be 0. This means G, F and C has to be 0. ठीक है, यहां तक डाउट तो नहीं किसी को? बताएं आप लोग, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं यहां तक. ये बताएं आप लोग की अगली क्लास तो नहीं है कोई अभी? अगर है तो मैं छोड़ दूं, अदरवाइज 10-15 मिनट में क्लास और कंटिन्यू कर दूं. नहीं सर, कोई क्लास नहीं है, आप कराइए. ठीक, एक आर्टिकल में और करा देता हूँ. फिर कल वाली क्लास से, आई मीन जब भी नेक्स्ट क्लास है वहां से क्वेश्चन सब एक्सरसाइज से कराना है, क्योंकि इस पहले चैप्टर का ये लास्ट आर्टिकल है. ठीक है, इसके बाद आपको अब तक जितना पढ़ा है इस पर कंबाइंड क्वेश्चंस हम करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं. So next article is article 5.7, and this is lines joining the origin to the intersection of a curve and a line. पहले इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करें कि आर्टिकल क्या कह रहा है. आई मीन
lines joining the origin to the intersection of a curve and a line. Suppose we have some curve given by this one, and suppose any line is there which cuts this curve. So let me write this equation of this curve. This one is your curve. It may be any curve. So, and this one is a line given by equation, say Lx plus My equal to 1. I mean, in general equation of line is Ax plus By plus C equal to 0. So if C is non-zero, then one can always write divide by C. You'll get A by Cx plus B by Cy. In fact, you can divide by minus C is equal to 1. You can assume this one as L, this one as M. So you can write Lx plus My equal to 1. So in this format, the equation of line is given to you. And let me denote this equation of curve by this one. Curve of degree 2 in xy as ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Now question is that this is equation of curve given to you, this is equation of line given to you. Lx plus my is equal to 1. Now we need to find, we are interested in finding, suppose this line cuts the curve at A and B. Suppose this line cuts the curve at A and B. Now let us join this point A and B with the origin. We know that from 2 points, line passing through 2 points is always unique. Okay. So if we join this point to the point of intersection of the curve and line, and let us assume that origin be denoted by O, then we need to find combined equation of OA and OB. Combined equation of OA and OB. Combined equation of line OA and OB. ये आर्टिकल आपको क्लियर हुआ? आपको एक कर्व का इक्वेशन दे रखा है, एक लाइन दे रखा है, कर्व और लाइन जहां कट करेंगे उसको आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर लाइन ड्रॉ कर लो. You have to find joint equation of OA and AB. Question is, what is joint equation of lines OA and OB? तो देखो बहुत आसान आर्टिकल, अगर आप गौर करो तो हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था? Pair of lines passing through origin. Equation of pair of lines passing through origin जो जनरल इक्वेशन होती है क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by, इसमें सारे टर्म जो होते हैं 2 डिग्री के होते हैं सारे टर्म. तो जब भी ओरिजिन से पास करेगा, so joint equation of OA and OB is given by homogenizing equation of curve with the help of line. एक्चुअल में देखो यही इक्वेशन यहाँ पे तो ये ऑलरेडी 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है. प्रॉब्लम क्या होगा? यहाँ पे 1 डिग्री है, लीनियर है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म है. तो आप इस लाइन के हेल्प से अगर मैं इस इक्वेशन को होमोजेनाइज कर दूं, सो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस OA एंड OB. क्योंकि आपने देखा ना कि इस फॉर्मेट में जब सारे टर्म्स 2 डिग्री के होंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? So now we know that the equation to a pair of straight line passing through origin is a homogeneous equation of 2nd degree, and if this pair passes through the point of intersection of 1 and 2, I mean A and B, then using equation 2 to make first homogeneous, I mean of same degree, we have this one. Now you can see that the first 3 terms are already of degree 2, so there is no need to do it. So ax square plus 2hxy plus by square, and then ax square plus 2hxy plus by square plus 2. Now here you can see that 2gx, I can write 2gx into 1 plus 2fy into 1 plus c into 1 square, and in place of 1 write Lx plus My.
So I can rewrite this equation as ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx into 1, that is lx plus my plus 2 times fy lx plus my plus c times lx plus my whole square is equal to 0. So this equation, basically this equation is going to represent the joint equation of line OA and OB. This is going to joint equation of line OA and OB. ठीक है? Here we have considered this. Suppose line cuts the curve in n. Suppose your equation is of n degree and in x and y. Then line will cut in at most 10 points. So similarly, same is the idea again. One can extend it. But here I have restricted myself to this particular case. So you can see that all those xy which satisfy this equation and this equation is also going to satisfy this one. If xy, you can get back everything. Why? Because if xy satisfies this equation, then in place of lx plus my, I can write 1. So put here 1 again. Then again xy is also satisfying this equation. So you have ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c, which is already equal to 0. So this is why this is the joint equation, because see, any point lying on this line satisfying both the equation, I mean of curve, this, see, this a satisfy both equation, curve as well as this one. So what will happen, that all those xy which satisfies equation 1 and 2 is also going to satisfy this equation, say star. So this is a technique to homogenize. I mean, whenever a curve is intercepted, I mean a curve, whenever we have intersection of a curve and a line, and we are interested in trying to have equation or joint equation of the line joining origin to the point of intersection of curve and the line. So this is always given by homogenizing equation of the curve with the help of the line. ठीक है? अब देखो इसमें हर एक टर्म 2 डिग्री का हो गया. क्यों 2 डिग्री का हो गया? This one is already, अब यही है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन क्या होता है? 2 डिग्री. Now you can check here that every term is of degree 2. Why? This one is of degree 2, this one is of degree 2. Now when we multiply x into x, again it is of degree 2. When we multiply x into y, again this one is of degree 2. Same is the situation here. When y get multiplied into x and when y get multiplied into y. And you can see that if you use a plus b whole square, then we have x square plus y square and some terms of xy, 2 times lx my. So in that you have the term x into y. So every term in this equation is of degree 2. And whenever we have studied that whenever we have equation of this type, this always represents a pair of straight line. Why? Because for this equation, g, f and c are 0. You can see that there is no term g, f and c are 0. So when in this formula a, b, c plus 2f, gh minus af square minus bg square minus ch square, this will be always 0. Why? Because c is 0, so this term is going to be 0. G is 0, so this term is going to 0. F is 0, so again this term is going to be 0. And again this term involved G. So here it will be 0. And A, B, C, in A, B, C, C is 0. So this term is going to 0. So whenever we have equation of this format ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, it always represents a pair of a straight line passing through origin, Now you can collect the term here. You can find that either every term in this one is of this type. Every term is of degree 2 in xy. So this is the reason why this represents pair of straight lines of joint equation of OA and OB. OB आपको आर्टिकल क्लियर होगा. अब क्वेश्चंस पे आते हैं. देखो आर्टिकल में तो कुछ था नहीं ऐसा, सिंपली जो आपको कंडीशन यूज किया वो मैंने करा दिया. अब सवाल देखते हैं इसमें. तो आप एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, first question from your exercise is question number 1.
show that the straight lines joining the origin to the points of intersection. Please mute your mic. Please mute your mic. Now this is the question. Show that the straight lines joining the origin to the point of intersection of the line this and curve this are at right angles to one another. सवाल समझ में आ गया आप लोगों को? पर समझिए पहले से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ. कोई समझाएगा इस क्वेश्चन में क्या करना है? किसके किसके बीच में एंगल निकालना है या क्या करेंगे, कोई बताएगा? पहले आप बताएं, फिर उसके बाद मैं देखूं मुझे किस लेवल से आके समझाना है. यस एनीवन? तो आप सब कच्चे इस तरह के क्वेश्चन आप करके आए. देखो मेरा तो मानना है कि अगर मैं कितना भी थ्योरी पढ़ लूं और मुझसे सवाल नहीं लगते, इसका मतलब थ्योरी में लूप होल है. मैं आई मीन मुझे क्लियर नहीं हुई पूरी तरह से थ्योरी. हाँ दिव्यांशु बताएं, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या करेंगे इसमें बताएगा कोई? ठीक, चलो ठीक है. देखो ये आपको मालूम है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन जब भी इस तरह का होगा तो उस केस में जो एंगल दिया जाता है दोनों लाइन के बीच में क्या होता है? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b. और अगर वो एंगल्स, वो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर, सपोज दिस रिप्रेजेंट्स टू लाइंस L1 L2 and if L1 is perpendicular to L2 then we must have a plus b equal to 0. A plus b equal to 0 means coefficient of x square plus coefficient of y square. Coefficient of x square plus coefficient of y square must be 0. यही तो है. पहले आप आर्टिकल देखो, कोई भी सवाल करने जा रहे हो ना तो जो जो उससे रिलेटेड थ्योरी पहले एक बार रिकॉल कर लिया करो, उसके बाद सवाल प्रोसीड करते हैं. मैंने क्या कहा कि whenever we have equation of this type we already know that this is always going to represent pair of straight line passing through origin and angle between them. We have proved this article, the tan inverse 2 root h square minus ab upon a plus b, or you can say cot inverse a plus b upon 2 root h square. And if line L1 is perpendicular to L2 then we must have a plus b equal to 0. A plus b equal to 0 means coefficient of x square plus coefficient of y square is 0. But here question is that we need to find, suppose this one is any curve, this one is any curve given by 2x square plus y square plus x plus y equal to 0. Suppose this one is a curve and this one is any line, says 7x minus y plus 2 equal to 0, 7x minus y. So wherever they intersect a b, we need to join this a and b with the origin and let us call origin. So we need to find the joint equation of OA and OB first. OA and OB, joint equation of the line, pair of straight line OA and OB. जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद, तो अब ये बताओ ठीक है OA OB का जो भी इक्वेशन आएगा, लेकिन ये दोनों लाइन पास तो करना ओरिजिन से. इसके लिए हमने आर्टिकल क्या पढ़ा कि कर्व के इक्वेशन को मैं लाइन की इक्वेशन से होमोजेनाइज कर दूं तो वो इक्वेशन OA और OB का ज्वाइंट इक्वेशन आ जाएगा. जब वो ज्वाइंट इक्वेशन आएगा तो वो 2 डिग्री का होमोजेनियस होगा क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा हो. जैसे 2 डिग्री का होमोजेनियस हो, ये फार्मूला लगा सकते हो आप, दिखा दो कि परपेंडिकुलर होने के लिए, राइट एंगल होने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या होना चाहिए? 0. ठीक है, यहां तक डाउट तो नहीं किसी को? ठीक, तो प्रोसीड करते हैं. एक काम करो, ज्वाइंट इक्वेशन
ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, इस ये जो ऐसा नहीं कि इसके बीच में एंगल निकालना है, पता नहीं ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, तो कोई भी कर्व हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लाइन और ये कर्व जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको मैं ओरिजिन से ज्वाइन करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व इज ज्वाइंड बाय इक्वेशन, सॉरी origin. We need to find joint equation of those straight lines and then angle between those straight lines. Joint equation of line OA and OB will be obtained by homogenizing equation of curve with the help of line. So you need to homogenize this equation. Make homogeneous this equation of, let me call this as equation 1 and this one as equation 2. So make homogeneous. Already it's OA and OB, it's passing through origin, so there is no need to write, just I'm mentioning here. Make homogeneous equation of equation 2, that is of curve, with the help of equation 1, with the help of equation 1, that is line. So I can write this 7x minus y, 7x minus y is equal to minus 2, and then I can write 7x minus y upon minus 2 is equal to 1. So I can see, you can write this equation 2x square plus y square plus x plus y equal to 0. So you can see that this one is already of degree 2, this one is of degree 2. I can write x as x into 1 and y is y into 1. So in place of this, some students are waiting, let me introduce. Okay, so you can see that 2x square plus y square plus x, in place of 1, you need to write 7x minus y upon 2, 7x minus y upon minus 2 plus y into 7x minus y upon minus 2 is equal to 0, अच्छा यहाँ पे देखो एक काम और, कुछ लोग सोचेंगे कि हो सकता है सर ये लिख दे तो क्या प्रॉब्लम, -2 upon 7x minus y equal to 1, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हो, लेकिन इसको अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो अब ये टर्म 2 डिग्री के बनने चाहिए, वो नहीं बनेगा ना, यहाँ x का x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x का y में करोगे तो 2 डिग्री का टर्म आ रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन अगर आप ये रख देते हो 1 की जगह पे -2 अपॉन, तो एक x डिनोमिनेटर में आएगा और x न्यूमरेटर में, तो डिग्री 2 डिग्री टर्म तब वो होमोजेनियस नहीं कहलाएगा, इस वजह से x और y न्यूमरेटर में होना चाहिए, यार ख्याल रखेंगे इस बात का। प्लीज म्यूट योर माइक हसन, प्लीज म्यूट योर माइक। Okay, 2x square, so this one is homogeneous. Now you can simplify it and you can see that, see we know that this equation is of this format, ax square plus 2hxy plus by square equals 0, and if this will always represent pair of straight line, the only condition is that to show that both lines are perpendicular, I mean at right angles, we need to show that coefficient of x square plus coefficient of y square equal to 0. So why not just compute coefficient of x square and y square from this equation and show that their coefficient is 0. So for perpendicular, for lines to be perpendicular, we have coefficient of x square plus we need to show coefficient of y square is equal to 0. So just compute coefficient of x square and coefficient of y square. So you can see that coefficient of x square from this is 2. Now next coefficient will be when we multiply x into this x, I have 7 upon minus 2. Or in fact, okay, right, 7 upon minus 2. In fact, we need to take LCM and then proceed. Okay, so I can write here 7 upon minus 2. Next, when we have this x square, okay, so I think only term will be from here x square, and when x multiplied into x, we have x square term. Now y square, coefficient of y square is 1 here, and coefficient of y square when we multiply this y into y, so at this time I have -1 upon 2. Is it -1 upon minus 2? 7x of minus y upon minus 2 है ना ये, so y minus 1 upon 2 देख लेना जरा कैलकुलेशन आप लोग, देखो ये 0 हो रहा है क्या, हो रहा है सर, है ना, 2 minus 2 कितना हो गया, -4 plus 7 -3, तो ये हो गया -3/2, ओके, -3/2 और प्लस ये कितना आ जाएगा 3/2 इक्वल टू 0.
तो आपने क्या दिखा दिया कि कोफिशिएंट, यही तो है कंडीशन कि दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनमें क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0। तो ये मैंने शो कर दिया। दिस मींस joint equation of line is given by this equation and the lines are perpendicular. Why? Because coefficient of x square plus coefficient of y square is 0. ठीक है, डाउट तो नहीं है अब किसी को? लाइन क्लियर हो गया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पहले ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है, ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द लाइन। पहले इस कर्व और लाइन का जो भी इंटरसेक्शन आए उसको ज्वाइन करने वाले लाइन के, ये आपका लाइन सपोज के L1 हो गया और ये लाइन L2 हो गया, इन दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन निकालना OA और OB का। तो हमें वो क्योंकि ओरिजिन से दोनों पास कर रहे हैं तो वो कैसे आता है, आप कर्व के इक्वेशन को लाइन से होमोजेनाइज करो, अभी हमने आर्टिकल देखा वो। अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपका कंबाइंड रिप्रेजेंट करेगा OA एंड OB, OA into OB इक्वल टू 0। ये ज्वाइंट इक्वेशन है। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है और साथ में, सॉरी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि कोई भी 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही देगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। द ओनली थिंग इज दैट वी नीड टू शो दैट दे आर परपेंडिकुलर, दे विल बी परपेंडिकुलर। So for that I need to compute coefficient of x square plus coefficient of y square and show that their sum is 0. So that we have shown. ठीक है, डाउट तो नहीं है यहाँ से? एक मैं क्वेश्चन और लिख देता हूं, आप लोग इसको एज अ होम असाइनमेंट ले लें और नेक्स्ट क्लास में इसको करके आएंगे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों ने अभी किताब न ली हो और इसका PDF अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन सेकंड इज दैट प्रूव दैट द एंगल बिटवीन the straight lines joining the origin to the intersection of the straight lines एक मिनट, हेलो, हाँ, of the straight lines। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर। Straight lines y is equal to 3x plus 2 with the curve x square plus 2xy plus 3y square plus 4x plus 8y minus 11 equal to 0 is tan inverse 2 root 2 upon 3। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना, ये प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस एंड द कर्व दिस। सो अगेन यू हैव टू होमोजेनाइज, आपको इसमें नहीं निकालना है कि ये तो पता भी नहीं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम इस आई मीन दिस इक्वेशन, वी विल होमोजेनाइज दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लाइन। होमोजेनाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिख लो y minus 3x is equal to 2 and then y minus y 3x minus by 3x upon 2 equal to 1। हाँ, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे 2 upon y minus 3x equal to 1, ये नहीं यूज करेंगे क्योंकि y और x डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे x into 1 लिख के और y into 1 और यहाँ 1 into 1 स्क्वायर, तो डिग्री 2 के मुझे चेक करना है कि क्या होमोजेनाइज करने के बाद हर एक टर्म डिग्री 2 के हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पे इसको लिख दो 4x into 1 8y into 1 और 11 into 1 होल स्क्वायर और 1 की जगह ये रख दो y minus 3x upon 2। Now that will be represent joint equation of pair of straight line joining the origin to the point of intersection of the straight line this and the curve this। अब जब वो आ जाएगा तो उस पे आप लगाओगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 root h square minus ab upon a plus b, तो जाके ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे करके और जब भी नेक्स्ट क्लास हो वहां हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, पहले मैं वो करा दूं आपको, और इसमें 5-6 क्वेश्चन है और कुछ मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आप उससे करेंगे। ठीक,
और कोई किसी का डाउट तो नहीं है? ठीक है, देखिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो वैसे मैं कर देता हूँ, पर कभी कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्ड नहीं भी हो पाता है, तो आप लोग क्लास में पढ़ा करेंगे। क्लास टीचिंग की बात अलग होती है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर तो मैं कोशिश करता हूँ अगर रिकॉर्ड हो गया तो एज अ सपोर्ट आपको दे दूंगा। सर आज की क्लास जल्दी स्टार्ट हो गई थी क्या? नहीं नहीं, वो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, मैं कनेक्ट कर रहा था, हो नहीं रहा था, इसीलिए मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया था, है ना? अच्छा। ठीक। एक्चुअली मेरा अपना मोबाइल डिस्चार्ज हो गया जब उस वक्त आया, और वो पहले मैं ईमेल करता हूँ, ईमेल करने के बाद वो कॉपी करके आप लोगों को भेजता हूँ, किसी का मेरे पास ईमेल आईडी आज नहीं था। प्रॉब्लम ये हो रही है। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है। आवाज